जय हिंद एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में हम आज देखेंगे इनटू ऑफ पीक इनटू एवरीडे चाइना, ट्रबल इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के अंदर कुछ हो रहा है। अमूमन हम सोचते हैं कि चाइना का झगड़ा ताइवान के साथ है और इट इज विद इंडिया, बट there's a new trouble spot in the South China Sea which is coming between China and Philippines. It is the tensions are rising every day, and it appears that we might land up into a firefight over there. किसी दिन गोली चल सकता है वहां, इतना ये हो गया। और ये पूरा मामला जो है अंडर द रडार चल रहा था। इट्स गोइंग अंडर द रडार। वेरी लिटिल न्यूज हैज कम, वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द होल अफेयर। सो लेट्स गेट इनटू द साउथ चाइना सी। दिस इज द साउथ चाइना सी जो आप देख रहे हो। और ये right? What you see on the left is the mainland China. What you see on the right is Philippines, beach on beach, South China Sea, or what is underneath is the Spratly Islands. And the entire action is in Spratly Islands. Okay, now when you go into Spratly Islands, these are the full lot of Spratly Islands, छोटे islands हैं. कुछ islands reefs हैं, कहाँ आबादी भी नहीं है, some are habited. But that's not the point. Where is the problem? The problem is in Mischief Reef and the problem is in Ayungyan. Let's go further. Now, if you go into आप पूरा डिटेल्स में अगर जाएंगे तो ये मैप वो दर्शाता है 9 डैश लाइन। और ये जो बीच में there's one line, curved line, sort of a ऊपर से नीचे जो चल रहा है बीचों बीच साउथ चाइना सी में, that is the line which signifies 200 kilometers of economic zone, extended economic zone from each landmass, whether it's from China, Philippines, वगैरह वगैरह किसी से भी है. So the area in between that is only the international waters. The rest is all extended economic zones, EEZ, right? And the hexagonal line which you see is that area which Philippines has claimed as part of its maritime territory. So it's not as if China is the only one, everyone has its claims there. Okay, let's understand this a little better. Now, these Spratlys, quite a few of them are there. They are controlled not only by China, they're controlled by China, they're controlled by Philippines, Taiwan, and Vietnam, and some even by Malaysia. तो if अगर आप थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो बड़ा क्लियर है कि जितने येलो डॉट्स हैं वो सब फिलीपींस के कंट्रोल में हैं। जो रेड डॉट्स हैं दोज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना. The purple dots are under the control of Vietnam. The blue dots are under the control of Malaysia. And the green dots are under the control of Taiwan, which is one in the center. The problem has been coming around Misty Reef and Oyingen. And of course, Scarborough Shoal, which is a little to the north. We'll get to that. And the latest flashpoint there is Ayungin and Scarborough Shoal. Look what's happening there. आप जरा देखिए. Have a look at this. If you look at this, this gives the shipping routes in the South China Sea. Okay, and just to give you an idea of this, the circle on the top is where the Spratly Islands are, and the circle on the bottom is the Malacca Strait. तो आप देखिए जितना भी शिपिंग है वो मेनलैंड के और बिटवीन द मेनलैंड एंड Spratly Islands जाता है, because the Spratly Islands are quite shallow. Okay, and of course, China lays claim to the entire area as per the 9 dash line. Okay, now let's take it further. Now, what is the history? इसका history क्या है? वो ये history समझना important है.
In 2013, the People's Republic of China began island building in the Spratly Islands. Island building in the South China Sea was earlier done. पहले जो है वियतनाम और फिलीपींस ने किया और ये वर्षों से चल रहा है. पर small, the scale was pretty small. चाइना जो है थोड़ा लेट आया इस स्केल के अंदर. पर जब से ये आया है स्केल के अंदर 2012-13 से इट हैज बीन एट अनप्रेसिडेंटेड स्केल. बड़ा बड़ा आइलैंड बना दिया और 2014 से लेकर 2016 तक उन्होंने they have constructed new island surfaces, right? More than all other nations have constructed throughout the history. और 2016 से all these islands have been militarized. That's the problem. Now, what is the effect of this? The effect of this is just think, अगर उस circle के अंदर it's a military pivot controlled by China, then the entire shipping routes are controlled by China. So tomorrow, if China wants to stop shipping, it can do so. No international shipping will go there. Or if it wants to collect tax, it can do so. Because as per them, you are going through their territorial waters. बट ये एक तरफा खेल नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया, जैसे इसमें बताया आपको, फिलीपींस का भी खेल है, वियतनाम का भी बोलबाला है, ताइवान का भी है, मलेशिया के भी है, बिसाइड्स चाइना. ओके, लेट्स गेट बैक टू जो कहानी वहां हो रहा है. 2013 में the Republic of Philippines instituted arbitral proceedings against the PRC under UNCLOS कि भाई ये हमारे आइलैंड्स को ले रहे हैं और इन्होंने जो साउथ चाइना सी घोषित किया है कि 9 डैश लाइन वगैरह उनका है, वो नहीं है, राइट? ऐसे करके इन्होंने आर्बिट्रेशन के लिए क्योंकि तब तक इन्होंने कर दिया था कि 9 डैश लाइन के अंदर जो भी है इट इज चाइनीज टेरिटरी. इसका मतलब अगर वो मान गए तो जितने आइलैंड्स बाकी ऑक्यूपाई कर रहे थे दैट्स ऑल इलीगल. सो फिलीपींस वेंट अहेड विद दिस. ओके, 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हेग में the arbitral tribunal adjudicating the Philippines case against China and the South China Sea ruled overwhelmingly in the favor of Philippines, determining that the major elements of China's claim, including its 9 dash line, recent land reclamations, and other activities in Philippine waters were unlawful. इन्होंने इसका मतलब बड़ा क्लियर है, आज के दिन भी जो 9 डैश लाइन है वो अनलॉफुल है as per international rule based order and international court of justice. इनका आर्बिट्रेशन डिसीजन है ये, राइट? और चाइना ने तो सब कुछ नकार कर दिया कि भाई हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है और इन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया इट इज नल एंड वॉइड. ओके, डज इट स्टॉप देयर? दे हैव स्टार्टेड ड्रजिंग एंड बिल्डिंग मोर आइलैंड्स एंड अभी क्या है, दे आर पुशिंग एवरीवन आउट एंड इनफैक्ट they have trained their guns on फिलीपींस. वो चाहते हैं कि फिलीपींस के जितने आइलैंड्स हैं उसके ऊपर कब्जा करें. वही पैटर्न निकल के आ रहा है कुछ दिन से. ये चाइना वाले करते क्या है, वो बड़ा सिंपल है. एक नाव लेते हैं, वो एक पाइप डुबो देते हैं सी बेड के अंदर और वहां से पानी खींचते हैं. पानी के साथ मिट्टी भी आता है. वो एक लंबा सा पाइप लेके वो पूरा पाइप जो है आप देखिएगा, ऊपर से जो पाइप जा रहा है वो आइलैंड के ऊपर डालते हैं और पंप करते रहते हैं और वो पंप किया पानी के साथ वो आइलैंड भरता हुआ जाता है और उसके साथ साथ मिट्टी आता है और धीरे धीरे दैट गेट्स फिल्ड अप. एंड ये है इनका टैक्टिक्स. और ये देखिए जिस तरीके से ये बहुत ड्रेजर्स इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी डालते रहते हैं आइलैंड्स के ऊपर और वो रिक्लेम कर देता है. और 2014 और 15 के बीच में ऐसे एक आइलैंड है जिसको इन्होंने रिट्रीव किया है और ये है एक और आइलैंड है जो अंडर रिट्रीवल है. आप देख सकते हैं कि बीचों बीच ये ड्रेजर्स काम कर रहे हैं, मिट्टी नीचे से समुद्र से निकाल रहे हैं और ऊपर फेंक रहे हैं.
जो केंचुए की तरह अंदर हैं, वो सब इनके ट्रेजर्स हैं। और यहाँ एक इस आइलैंड के ऊपर चाइना इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग एन एयरपोर्ट। ओके, एक और आइलैंड है, ये लेफ्ट में जो देख सकते हो, दैट इज दिस पार्ट ऑफ द आइलैंड विच इट वाज इन 2012। राइट में जो है, ये जब पूरा फिनिश हो गया, 3 साल के अंदर इन्होंने पूरा आइलैंड को खड़ा कर दिया और इसमें सब कुछ जो भी इन्होंने लगाना था लगा दिया। इस प्रकार चेंजेस आए हैं साउथ चाइना सी के अंदर, ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स के ऊपर जो इन्होंने बनाया है। और ये है एक आइलैंड जो सूबी रीफ का आइलैंड है, ये इसको माना जाता है। ये पहले 2014 के एंड में इसका आकार ये था, 2 महीने के बाद ये थोड़ा और बढ़ गया, 3-4 महीने के बाद और बढ़ गया, और आगे जाके इतना बढ़ गया, और फिर इसमें और चेंज हुआ है, फिर आखिर ऐसे इस हालत में पहुंच गया। तो आप देखते हो, ये 1 साल के अंदर दे हैव बिल्ट दिस कंप्लीट थिंग, एंड टुडे इट लुक्स लाइक दिस विद अ प्रॉपर रनवे इन बिटवीन। वहां हवाई जहाज निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वहां रडार फैसिलिटीज हैं पूरा। वहां यहाँ तक दे पुट अ सुपरमार्केट आल्सो इन दिस प्लेस, Subi Reef, right? So they've militarized 4 to 5 islands out there, and now they're threatening everyone else. How are they threatening? You see, ये जो fishing boats which are there, the Chinese Coast Guard vessels which are so big, yeah. You see the comparison between these other fishing boats, and then they come and threaten these people and throw them out. And then this is a militia boat of the China. ये जो सलामी स्लाइसिंग करते हैं, धीरे धीरे इनको पुश आउट कर देते हैं। What they have done 2014 to 16 is they have occupied all the islands. Now, based on those islands which they have occupied and militarized, they're using their fishing boats and the fishing militia, which is huge, which is the biggest fishing militia and patrol boats in the world. They're slowly pushing everyone out. Okay, that is why this whole place has become a tinder box. कभी भी वो यहाँ लड़ाई छिड़ सकता है, और खास करके पिछले 2 महीने में जो गतिविधियां हुई हैं यहाँ, इससे जाहिर होता है कुछ न कुछ होने वाला है। Okay, now this is another picture of a Chinese Coast Guard vessel, right? And a fishing boat. You can see another Coast Guard vessel in the background. आप देख सकते हैं, इसका अंतर देखिए कि कोस्ट गार्ड वेसल कितने बड़े हैं और ये फिशिंग बोट्स कितने छोटे हैं, राइट? और इनका जो मिलिशिया के बोट्स भी हैं, जो मैंने पहले इससे पहले दिखाया, उतने ही बड़े हैं इनका डिफरेंशियल। एंड दिस मिलिशिया आर आर्म्ड मिलिशिया, they have guns against fishing boats which have nothing. Okay, now you see these fishing boat, this patrol vessels keep patrolling in the South China Sea regularly, and now this whole problem is between Mischief Reef and Ayungjin. You know, इसका जो बैकग्राउंड ये है, इफ यू सी इन Ayungin, you see one small thing called Shea Madra. So the Philippines are also smart people. They knew that one day this Chinese will start making problems. Long back, somewhere in the late 90s, they in fact, they took a World War vessel, and old World War vessel, and grounded it there, right? And that is manned by Philippines. Why? They don't want China to come and occupy this, because if China occupies this, then if you see Ayungin is just next to Philippines, the next stop is threat to Philippines. So they've put a boat out there, old boat, and it is in the shallow water. You can see the boat, and people are doing fishing and snorkeling. Uh, जितने भी ये फिलीपाइंस के sailors हैं. Time in the first week of August, one fine day when the Philippines Navy went, for to uh, supply logistics, ये चाइना कोस्ट गार्ड वालों ने आके उनको रोक दिया। और कैसे रोका? ये वाटर कैनन्स इस्तेमाल किया। इनफैक्ट ये यही हेडलाइन है, द फिलीपींस हैज अक्यूज्ड चाइना's कोस्ट गार्ड ऑफ firing water cannons at its vessels and preventing resupply
of that Sierra Madre, uh, you know, vessel, which is grounded in Ayungin. Okay. Then what else has happened? Now like it is reported the incident is occurred in disputed waters of South China Sea in August 5th. It's almost 2 months old now. This whole story is going on. The Philippines people try to get to that ship to resupply their crew there. The Chinese Coast Guard people come and fire water cannons and prevent Philippines from doing it. But Philippines have been doing it at night, something, and that ship is still there, and they're not being allowed. Uh, Thereafter, the Philippines Coast Guard also started carrying, accompanying uh, those resupply vehicles, and they somehow managed. So, but this has been going on. This tussle has been going on for the past 1.5 months. Now a new thing has opened up. What is the new thing? Okay, if you see, there are two Chinese petrol boats. ये दोनों पेट्रोल बोट्स के बगल में अगर आप देखेंगे तो कुछ डॉट 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 सा एक लाइन नजर आ रहा है. What is this? ये जो जगह है, ये there's a place called Scarborough Shoal. अभी मैप दिखाता हूँ. वहां इन्होंने किया है. उसमें क्या किया इन्होंने? 300 मीटर लंबा एक बैरियर, एक फ्लोटिंग बैरियर उन्होंने they put it in the sea so that no one can cross this barrier. And in this Scarborough Shoal, if you unless you cross this barrier, you can't get into the Scarborough Shoal. And Scarborough Shoal, people want to go because it is full of fish. And the Chinese have the capability to open that barrier for their own people and stop others from entering when they don't want. And they're banning it with this thing. Next story in this is see where Scarborough Shoal is. Scarborough Shoal is north of Ayungin. So there's a problem at Ayungin where Philippine soldiers are, being stopped from being resupplied. And in Scarborough Shoal, people are not being allowed to go to do fishing. Okay. Now that became serious. And then Philippines said, we will do what we have to do. That's the story, the most important part of the story. So this is the way they do it. You see on near side, जो हमारा नजदीक है, you see a whole lot line of Coast Guard ships, Chinese Coast Guard ships. That's the Scarborough Shoal, and you'll see if I show it to you closely. अगर आप देखोगे तो वहाँ Chinese vessels are वो fishing कर रहे हैं अंदर और उसके दूर वो है बाकी देश के vessels वो नजदीक भी नहीं आ सकते. राइट ये कहानी वहां चल रहा है एज ऑफ टुडे बट मोर इंटरेस्टिंगली ये जो स्कार्बरो शोल के एक कोने में चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड ऑब्वियसली आप अगर आप देखोगे तो इट्स अ रडार इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम एक हेलीपैड भी नजर आ रहा है सब कुछ है सो दे बीन प्रिवेंटिंग एंड दे बीन मेंटेनिंग फुल निगरानी रख रहे हैं जो भी गतिविधियां हैं बाकी देशों का और खास करके फिलीपींस बिकॉज दे वांट टू गेट टू क्लोज द फिलीपींस. ओके नेक्स्ट क्या है कि ये जो बैरियर है दैट बैरियर हैड अंडरग्राउंड एंकर्स एंड एंकरिंग सिस्टम सो द actually initially the Philippines claimed that the barrier was installed by China so they sent divers उन्होंने डाइवर्स को भेजा अंडरग्राउंड आप देख रहे हो और ये बैरियर को काट दिया और उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया. ये पिक्चर आप देख रहे हो दिस इज फ्रॉम द स्टिल्स ऑफ द वीडियो जो इन्होंने जारी किया. एक देखिए ये काट रहा है और लास्ट ये है ये काट चुका है और वो बैरियर को हटा दिया इन्होंने. पर इनका जो कोस्ट गार्ड का जो शिप्स है वहां अभी भी वही है चाइना कोस्ट गार्ड का. Philippines has said we have plans how to evade their coast guard and go. So it's almost some kind of a confrontation which has already taken place. और ये 2 दिन हो गया अभी तक China has not retaliated. So this is where it is. What is the options now? Option: will China force its way and reconstruct? Difficult because now Philippines has shown a clear intent कि आप कुछ भी लगा दो हम काट देंगे. क्या ये चाइना मिलके फिलीपींस को अटैक करेगा? अगर इसके साथ फिलीपींस के साथ अगर लड़ाई छिड़ गया तो ये जरूर
it's almost inevitable that Vietnam also will get attacked, or all the shores or the islands which Vietnam has occupied, they'll get attacked. So with Taiwan and Malaysia. So everyone will be drawn into the dispute. It is not only Philippines, everyone will be drawn into the dispute. If that happens, this can spread. अब देखिए where is Ayungin is there. Ayungin के north, just a little north of Ayungin is Scarborough Shoal. So virtually you will have this problem, which means what? Problem. We all thought the flashpoint was Taiwan and India, but there's a new flashpoint which is going on almost on the verge of firing. As it is, China is not happy with Philippines because Philippines has allowed American bases, 4 American bases on its soil, and American patrolling this area along with Philippines. So, agar China escalates the situation, then there might be a shooting match between USA and China. This is on the cards. And if these two get involved, it's just natural. अगर आप थोड़ा नॉर्थ में देखिए, that is ताइवान, और फिलीपींस के बीच में जो इलाका है, that's called बाशी स्ट्रेट, and वो बाशी स्ट्रेट अगर बंद हो गया तो China's problems will get increased. Because I've not gone to the other thing, but that Bashi Strait is very important. And वो बाशी स्ट्रेट जो है बिल्कुल जस्ट अबाउट 50 माइल्स वाइड, यानी 70-80 किलोमीटर वाइड है. 2 शिप लगा दो तो ये बंद हो जाएगा. तो उससे क्या है कि द होल थिंग विल गेट कॉन्फ्लैग्रेटेड. अभी देखना ये है कि विल चाइना टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड डू समथिंग. क्या ये सलामी स्लाइसिंग ही करते रहेंगे या लड़ाई करेंगे? पर एक चीज बड़ा क्लियर है कि फिलीपींस is taken a stand because it has American backing. Similarly, Taiwan will also take a hard stand because it has American backing. Now it's a matter of whether they will go against Vietnam and Malaysia is to be seen. The thing is interesting and dangerous, right? To end this show, all I'll say is we thought the flashpoints were Taiwan and India. There's a third flashpoint occurring, and China can get sucked into it if it doesn't play smart. But knowing Chinese, I don't think they'll retaliate immediately. They'll bide their time and do something else elsewhere. But let us see how it goes. We also have to remember simultaneously, China is doing a lot of military activity, including firing missiles, vagara vagara, around Taiwan, and also flying a lot of their aircraft around Taiwan. There's a lot of activity going on there. And all this is activity is going on when China itself is going through major problems. So, will China escalate the issue to externalize, or is China escalating the issue to make a statement? That is the question, and we will see it जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा. Thank you and Jai Hind.